Welcome guys. So let us see today very important concept, that is characteristics of common emitter configuration, right? But before that we should know this circuit, right? So this is your common emitter configuration. Emitter is common to input and output. Okay. So here see first of all how to do apply a battery. So our base emitter junction should be in forward bias. So this is your diode. So positive is connected to anode, negative is connected to cathode. So this base emitter junction is in forward bias, right? Now collector base junction should be in the reverse bias. So this is connected to VBB. This is again connected to positive terminal of the VCC. But we know the concept that in the diode, right, if anode voltage is greater than cathode voltage, then the diode is in forward bias, right? If anode voltage is less than cathode voltage, then this diode will be in reverse bias, right? So we will take care that if I am applying here 10 volts, okay, I will surely make that here 15 volts voltage will be there. अभी देखिए यहाँ पर 15 volts है, यहाँ पर 10 volts है, so cathode voltage is greater than anode voltage, so diode कैसे गया आपका reverse bias में गया, right? So anyway, this is regarding biasing of common emitter configuration, right? Okay, ये resistor हमने लगा दिए हैं, right, to control the current. Okay, now I इसमें जो करंट फ्लो होने वाला है वो क्या है आपका आई ई, राइट? इसमें जो करंट फ्लो होने वाला है वो आपका आई सी, और इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो आपका आई बी, राइट? एंड वी नो द इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, आई सी प्लस आई बी, राइट? ये हमने एक्सप्लेनेशन देते वक्त भी बोला था कि अगर यहाँ पर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर 2 फ्री होल्स है और यहाँ पर 98 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कलेक्टर में, राइट? ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, यू नो, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. सो करंट कैसे जाएगा? एमिटर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बेस में, और बेस में जाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिकम्बाइन होके बचे वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएंगे? कलेक्टर में जाएंगे, राइट? सो वी आर गेटिंग द करंट in common emitter configuration, right? Now this current here, beta is nothing but current amplification factor. Beta is nothing but output current divided by input current, right? So please refer the previous video where common emitter configuration is described in very much detail, right? And we know these two equations: beta is equal to alpha upon 1 minus alpha, and then alpha is equal to beta upon 1 plus beta, right? इस वीडियो में मैं एक important concept बताने जा रहा हूँ, ये है आपका ICBO, right? अभी देखिए क्या होता है कि बेस ओपन मतलब अगर मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई दिया ही नहीं, राइट? इफ आई रिमूव दिस पावर सप्लाई देन बेस एमिटर जंक्शन विल बी इन, यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं होगा. यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा मतलब क्या? हियर आई बी विल बी जीरो, यहाँ पर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है. ओके, अभी देखिए अगर मैंने एमिटर को ओपन कर दिया, एमिटर को अगर ओपन कर दिया तो फिर क्या होगा? बेस और कलेक्टर में करंट फ्लो होगा, यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं होगा, राइट? ओके, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इफ आई विल ओपन दिस एमिटर एंड इफ आई विल कंप्लीटली ऐसा ही सेटअप रखूंगा तो फिर क्या होगा? एमिटर ओपन रखने के बाद में क्या होगा? ये जो डायोड है, यहाँ ये डायोड में से तो करंट फ्लो नहीं होने वाला है, राइट? सो ये जो डायोड है ये कैसा है आपका? रिवर्स बायस में. And in reverse bias current will flow from, ये higher voltage है lower voltage है, so current will flow from collector to base, right? So this is ICBO is what? Current, ICBO is nothing but current from collector to base, but in this time emitter is open. Okay, अभी देखिए emitter open जब रखेंगे तब ये डायोड में रिवर्स बायस में करंट फ्लो होगा. रिवर्स बायस में डायोड में कौन सा करंट फ्लो होता है? सो रिवर्स बायस में डायोड में करंट फ्लो होता है, उसका नाम होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, राइट? सो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो रहता है, राइट, तो दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और वो बहुत बहुत कम होता है, राइट? मे बी इन माइक्रो एम्पियर्स और नैनो एम्पियर्स, राइट? सो बेसिकली जो कुछ आपका आईसी मिल रहा है ना इस कॉन्फ़िगरेशन में, व्हाट एवर आईसी इज गेटिंग, सो दैट इज ड्यू टू टू कंपोनेंट्स. एक तो ये पूरे के पूरे कैरियर जो है वो इंजेक्ट हो रहे हैं कलेक्टर रीजन में, राइट? सो आईसी ड्यू टू इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स प्लस आईसीबीओ, राइट? बट आईसीबीओ कैसा है? बहुत ही स्मॉल है, सो आई कैन निग्लेक्ट दिस आईसीबीओ. तो मैं ये बोल सकता हूँ आईसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईसी
injected, right? And then, by using this equation, I can write IC is nothing but beta times IB, okay? And then similarly, if I keep this, if I do not apply this, if I keep the base open, what current I will get? ICE, whatever current I am getting from collector to emitter, that is called as current from collector to emitter, but at that time, ICBO, at that time, base is open, right? So this is ICEO is equal to 1 plus beta times ICBO, right? So these are the formulas, right? Important formulas. अगर आपका difficulty level थोड़ा सा medium level पे आप पढ़ना चाहते हो तो ये वाले formulas याद रखिए. If you want simple concepts passing के लिए अगर देख रहे हो, then this concepts are important, and in this only this much formula is important, right? So this is regarding common emitter configuration, right? Now let us see the characteristics of common emitter configuration.